Hello everyone. So in today's class, we are going to continue with what we did in the last class. We revised some part of straight lines and coordinate geometry. So we are going to continue with the part, and today we are going to continue with the equation of lines. आज हम equation of lines तक आएंगे, and इसके बाद वाले क्लास में हम लोग basically problems and numerical start करेंगे. So coming to the last class again, let me show you the last class that we did. So this is something, wait a minute, I will go back. Okay, so this is something that we did last time. The very important concept, a concept of slope or gradient of a line. Okay, इसमें हमने slope is tan theta. इसमें दो conditions है. अगर line parallel to x axis है, slope is 0. Line parallel to y axis, slope is not defined. In case if the 2 points are given, we can give the slope as y2 minus y1 divided by x2 minus x1, or y1 minus y2 divided by x1 minus x2, provided x1 is not equal to x2. If the lines are parallel to each other, then the slopes are equal. If the lines are perpendicular to each other, then the slopes, the product of slopes is equal to -1. In other words, the one slope is a negative reciprocal of other. Okay. One more point I would like to add, which I forgot in the last class, that if the question says that if the line is equally inclined, the line is equally inclined to the coordinate axis. To the coordinate axis matlab x axis and y axis, both the two axes, right? Then in that case, always remember, because ये हमने इसमें यूज नहीं किया था शायद बोर्ड्स में, but coordinate axis, then always remember that the slope is either +1 or it is -1. दो चीजें possible है. If the lines are, let's say, x and y axis है, and if the line is moving like this, passing through origin में consider कर रहा हूँ, then the slope is 1, and if it is like this, it is -1. एक जनरल नॉलेज की हम लोग बात करते हैं. जब भी लाइन, अगर हम ये x and y एक्सिस है, जब भी लाइन ऐसे जाती है like this, that means it is moving down, that means the slope is always negative. And if the line is moving like this, ये ऊपर जाने वाली line है, the slope is always positive. It's a simple logic you have to remember. Now coming back to this equation of lines, आज से start कर रहे हैं. So today we are going to start with equation of lines. So in this, first of all, I would like to discuss about standard lines. जब हम standard lines की बात कर रहे हैं, तो standard lines का मतलब होता है या तो हम x axis की बात कर रहे हैं, या तो हम y axis की बात कर रहे हैं, या तो हम line parallel to x axis, या तो हम line parallel to y axis. Once again, either I am talking about x axis, or I am talking about y axis, or I am talking about line parallel to x axis, or I am talking about line parallel to y axis. These are the possibilities. First of all, let me talk about line x axis. This is x axis, correct? The equation of x axis is always y equal to 0. क्यों ऐसे होता है? आपने देखा होगा कि x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है. Whereas if I talk about y axis, this is my y axis. Equation is always x is equal to 0, right? Now let's come to a line parallel to x axis. A line parallel to y axis. Right now, if a line is parallel to y axis, so I'm taking out two conditions. यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो conditions की बात कर रहे हैं. All right. So if the line is parallel to y-axis and at a distance of a, from y-axis, जब line parallel to y-axis है, तो हम distance किससे consider कर रहे हैं? y-axis से consider कर रहे हैं. And if distance is a, this distance is a, then the equation of line is x is equal to a. Okay, and if this distance is a, यहाँ पे ये a है,
right? Then the equation is x is equal to minus a, which means on the right hand side it is positive, on the left hand side it is negative. All right. Similarly, if I draw lines, which are parallel to x-axis. Now, let me draw a line parallel to x-axis, a line parallel to x-axis. Now, once again, if the line is parallel to x-axis and if this distance is b, then the equation of this line is y is equal to b. ओके और यही लाइन अगर नीचे बाजू है डाउनवर्ड देन द इक्वेशन ऑफ लाइन becomes y is equal to minus b. Y is equal to minus b. Okay, so let me complete everything. Equation of x-axis, y is equal to 0. Equation of y-axis, x is equal to 0. Equation of line parallel to y-axis to the right of it and at a distance of a, राइट साइड में है तो x इज इक्वल टू a. लाइन पैरेलल टू y एक्सिस टू द लेफ्ट इज x इज इक्वल टू माइनस a. line parallel to x axis above it at a distance b, y is equal to b, और below it है तो y is equal to minus b. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे और कुछ चीजें हमको समझ के लेनी है. सो इफ दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, these two lines is a comma b. The angle between the two lines is always 90 degree. That means if a line is parallel to x axis, another line is parallel to y axis, the distance between the two is always 90 degree. Sorry, the angle between the two is always 90 degree, and the point of intersection here is a comma b. If I talk about this is a comma minus b. Here the point of intersection is minus a comma minus b, and here the point of intersection is a comma minus sorry, no, I'm so sorry, यहाँ पे a minus a comma b आएगा. This is minus a comma b. Okay, so these are the point of intersection. Remember, if one line is parallel to x-axis, another line is parallel to y-axis, the angle between them is always equal to 90 degree. Now the last point, what is the distance between, ये बाद में आने वाली चीज है, मैं पहले से आपको बता रहा हूं. What is the distance between, let's say distance between I'm talking about x equal to a and x equal to b, which means I'm talking about lines parallel to y-axis. These are the two lines, let's say, is given by a minus b or b minus a, whichever is positive. A minus b or b minus a, whichever is positive. हमको positive value because we are talking about the distance. Okay, now the next one. In a similar manner, आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया, distance between y is equal to a and y is equal to b is given by, once again, a minus b or b minus a, whichever is positive. Right? That means in the first case, both the lines are parallel to y-axis. In the next case, both the lines are parallel to x-axis. Right? So whichever is positive. All right. Now let's come to actual equation of lines. मैं फिर से ये टाइटल दे देता हूं, equation of lines. Okay. Now equation of lines, right? So basically we are going to understand 6 different forms of a straight lines, equation of straight line, right? 6 different forms. ओके, बेसिकली फॉर्म, ये जब मैं वर्ड यूज करता हूँ, बेसिकली इट इज अ फॉर्मूला. तो हमको अगर इक्वेशन निकालना है तो अलग अलग तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो देयर आर 6 different ways in which you can find out depending upon the given condition. So फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्मूला है. फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है ये हमको समझ के लेना है. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, हम लोग अगर आप देखोगे स्ट्रेट लाइन का कोई भी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आपको 2 कंडीशंस कोई भी दिए हुए हैं, विच आर द 2 कंडीशन, बेस्ड ऑन दिस वी विल डिसाइड द फॉर्म्स. सो ऑलवेज 2 कंडीशंस आर गिवन, कोई भी इक्वेशन अगर लाइन का निकालना है तो. राइट, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट फॉर्म.
that is slope point form. Can you see there are two words, slope and point? Okay, naturally, when the slope and point is given to you, one slope, of course one slope is there and the point is there, that means we can use slope point form. This is the origin, this is x-axis, this is y-axis. Let me draw a line where we know the slope as well as the point. So let's say, okay, now let's say there is a point a, x1 y1, which is known to me, and there is a point p, x comma y. सो रिमेंबर लोकस में हम पहली स्टेप, स्ट्रेट लाइन इज अ लोकस, सो लोकस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंसीडर एक्स वाई एज एनी पॉइंट ऑन द लोकस एंड वी आल्सो नो द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट, व्हिच मींस स्लोप ऑफ एपी कितना दिया है हमको, m दिया है. हाउ डू वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एपी? इट इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. Basically it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and that is given to us as m. That means if I say, if I cross multiply that, y minus y1 is equal to m into x minus x1. ऊपर जो मैंने बताया वो समझ में नहीं आया, it's okay, but आपको ये फॉर्म याद रखना है, which is called as slope point form. Let me talk about the second form. Second form is when two points are given. So naturally हर बार आप देख लो, हमेशा दो चीजें हमारे पास होना जरूरी है अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है. So in the first case it was slope and point. In the second case we are talking about two points which are given to us. Okay, now with the 2 points which are given, now if this is the line and I know 2 points on the line, which are the 2 points? Let's say a point is there, which is x1 y1, b point is there, which is x2 y2, and as usual we know that straight line is a locus, so I'll say let p xy be any point on the straight line. Okay, now very important concept which I may have forgotten in the last class, that if the 3 points are collinear, if the 3 points are collinear, a b c are collinear points, then slope of ab is equal to slope of bc is equal to slope of ac. I repeat, if a b c are collinear points, तो slope of AB, slope of BC and slope of AC सारे equal होते हैं. Alright, now here, now look at this, इसका मतलब slope of AP is equal to slope of AB, right? So AB का slope, PB का slope and AP का slope सारा एक ही है, because they are collinear. So AP का slope अगर मैं निकाल रहा हूं तो y minus y1 upon x minus x1. Look at the points of A and look at the points of P. AB की जब बात चल रही है, A और B के पॉइंट्स देखते हैं, तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So now 2 point form लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं. So कुछ लोग इसको याद रखते हैं. I always prefer this because it is very, क्योंकि स्लोप ही निकाल रहे हैं in other words. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में शायद ऐसे लिखा होगा आपके, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. So there are different ways to look at the line. कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही इसमें ले लेते हैं. So it's up to you however you want to remember. So this is the second form. The first form was slope point form. The second form is 2 point form. ठीक है, आपको याद रखना है स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m into x minus x1. 2 point form is y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Let's talk about the third form. The third form, which is slope intercept form.
slope intercept form. Okay, now what is slope intercept form? So every time you see first case was slope point form जब slope and point दिया है, second is 2 point form जब 2 point दिया है, यहाँ पे slope and intercept, लेकिन intercept तो दो थे, एक तो x intercept and y intercept. Very important thing to remember here is this, here we are talking about which is y intercept hamesha, not about x intercept. So this is slope and y intercept is there. So let me try to explain you how do we go for this. Now these are x axis and y axis once again. So this is x axis, this is y axis, this is origin. Okay, now if I draw a line, okay, now if I draw a line like this, let's say, okay, जिसका we know the slope which is मान लो c है, intercept क्या है, c है, and we know the slope. Okay, so if this is c, that means ये जो point है, ये point a 0 comma c बनेगा because it is the point on the y axis. Its coordinate will be 0 comma c, right? Also I will take p as any point on the straight line जिसका coordinate होगा xy. Once again I'll say slope of ap is given to me as m. Remember a का coordinate 0 comma c है, p का coordinate x comma y है. So what is the slope? Y minus c, y2 minus y1 divided by x minus 0 is equal to m, is equal to m. Now y minus c is equal to mx and y is equal to mx plus c. This is your slope intercept form. बहुत बड़े काम की चीज है when it comes to the CT part. ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये. रिमेंबर इक्वल इंटरसेप्ट्स अगर विद द कोऑर्डिनेट इक्वल इंटरसेप्ट अभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बट इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है तो स्लोप इज इक्वल टू -1 या +1 होगा. इसमें भी ये बहुत काम की चीज है. Now, let's come to the fourth form. जनरली आपने इसको यूज नहीं किया, सॉरी फोर्थ फॉर्म इज यूज, सॉरी, और द फिफ्थ फॉर्म इज नॉट मच यूज. सो इधर टू इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहा जाता है. ओके, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन द सी इन द फर्स्ट केस इट वाज ओनली वन इंटरसेप्ट, दैट वाज वाई इंटरसेप्ट. डबल इंटरसेप्ट नेचुरली हमारे पास दो इंटरसेप्ट. इसको आप एलपीपी में भी डायग्राम ड्रॉ करके, हालांकि आपका अभी एग्जाम हो गया है, बट दिस इज द बेस्ट फॉर्म टू फाइंड आउट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन जो हमको लाइन ड्रॉ करनी है. सो लेट मी अगेन ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे this is x and this is y, this is 0 origin. So now let me draw a line जिसके intercepts हमको मालूम है. So let me say this is a line, this is let's say x intercept जिसका coordinate a comma 0 है. This is a y intercept जिसका coordinate 0 comma b है. As usual p is any point जिसका coordinate हमने लिया है x comma y. As usual अगर आप देखोगे तो it is similar to what we have done over here, 2-point form. Now we have 2 points actually and a point pxy as any point on the locus or a straight line. So now here let इधर slope of once again AP will be equal to slope of AB. Okay, we have 3 types of slopes which are available. उसमें से कोई भी दो लेना. ऐसे क्यों लिया है, AP क्यों लिया है, AB क्यों लिया है, आपको PB लेना है, PB ले लो, it will not matter. Once again, do not worry about which points you are taking. You just have to take 2 points. So AP है, AB है, PB है, कोई भी दो कंसीडर करो. Now AP के बारे में बात करो तो A और P, this is A and P अगर बात करो तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to, A और B की बात करते हैं तो 0 minus B divided by A minus 0. That means y upon x minus A
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ay बन गया, माइनस b क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस a बन गया। नाउ ay is equal to minus bx plus ab. Okay, now let me take bx on the left hand side, so it becomes bx plus ay is equal to ab. Let me divide both sides by ab throughout, सबको मैं ab से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो bx upon ab plus ay upon ab is equal to ab upon ab. So we have x upon a plus y upon b is equal to 1. This is called as डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो अगर मैंने जो प्रूफ इसलिए दिया है, मैंने जानबूझ के प्रूफ दिया है, आई नोज एज फार एज सीट इज कंसर्न इसकी कोई जरूरत नहीं, बट इन केस अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अपना खुद का जो प्रूफ है आप खुद डिराइव कर सकते हो। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। इफ नॉट, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। नाउ दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ तक तो आपने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में जो है आपने इसका भरपूर इस्तेमाल, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का तो एलपीपी में भी बहुत इस्तेमाल आपने किया होगा। नाउ दिस इज समथिंग, इसको ज्यादा आपने यूज नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म। एज इट सेज, सारी जानकारी अगर आपके पास जो है, अब यहाँ लाइन के बारे में जानकारी नहीं सी, अभी तक जितने भी फॉर्म किए, जो भी जानकारी आपकी के पास थी वो सारी जानकारी जो थी लाइन के बारे में थी। नाउ इफ आई गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल फ्रॉम द origin, the normal from the origin. Now remember, I am giving you the information about normal from the origin. This is the normal from the origin, right? Now what is the information that is available about the normal from the origin? Number one, इसका inclination अगर अल्फा है और इसकी लेंथ अगर p है, so the two important things that are given to you are not about the line. इसका अपने को equation चाहिए, but I am not giving you any information about the line. I am giving you the information about the normal which is drawn from the origin, right? In that case, यहाँ पे equation of line, now I am not giving you the proof because I know already ये सब confusing लग रहा है। तो x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. It is x sin alpha plus, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, is the equation of a straight line. Now what is alpha? Alpha is the inclination of the normal. Inclination क्या होता है? Non-negative angle with the positive x-axis, राइट ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन एंड पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। द सिक्स्थ एंड लास्ट वन, ओके, इट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है जब हम बोर्ड्स पढ़ रहे थे। नाउ यू शुड नो दिस बिकॉज अगेन इफ यू लुक एट इट, आपने इसके बारे में प्लेन चैप्टर है 12th में आपने प्लेन किया है, बिकॉज आई नो दैट ये जो अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपने 12th कंप्लीट किया है। So if you remember, the equation of plane was x minus x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. So similar kind of equation is there, x minus x1 upon यहाँ पे cos theta है is equal to y minus y1 upon sin theta है, and that is equal to r. Okay, now यहाँ पे क्या है? So basically if there is a line and let's say this is p x comma y as usual and there is a point x1 y1, राइट, और इसका जो इंक्लिनेशन है एंगल थीटा इज एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन थीटा इज द इंक्लिनेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज r, then x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r, where r is the distance between the point and the given point, that is a x1 y1.
दिस इज यूजुअली यूज टू फाइंड आउट व्हेन, अगर मैं आपको दे दूं एक लाइन है और इसमें एक पॉइंट आपको दिया है, और इससे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ आर की जगह 5 बोल रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए विच इज ऑन द लाइन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम अभी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर बात करें तो रिमेंबर दैट हमने 5 फॉर्म्स, अभी 6 फॉर्म्स सीखे हैं। वी हैव अंडरस्टूड 6 फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। कब कौन सा फॉर्म यूज करना है? डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन वी विल यूज द फॉर्म्स या फॉर्मूला, राइट? तो अगर स्लोप एंड पॉइंट दिया है तो आई एम गोइंग टू यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए हैं आई एम गोइंग टू यूज 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मुझे स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट दिया है तो आई एम गोइंग टू यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो आई एम गोइंग टू यूज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे सारी जानकारी नॉर्मल के बारे में है विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, आई एम गोइंग टू यूज द नॉर्मल फॉर्म विच इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पे अल्फा जो है इंक्लिनेशन है नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, उसका इंक्लिनेशन है, पी इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर कंडीशंस अपने को दिए उस तरीके से, थीटा इंक्लिनेशन एंड आर की वैल्यू अगर दिया है और x1 y1 दिया है, देन वी कैन यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म इज नॉट यूज टू फाइंड आउट द इक्वेशन बट द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इसके लिए यूज करते हैं ना। इंपॉर्टेंट चीज है, आप फॉर्म कोई भी यूज करो, आपका जो आंसर मिलने वाला है after solving the question, that will always be in a general form. This is now very important part which we are discussing. मतलब आपको आंसर, आप सॉल्व कोई भी फॉर्म से करो, आपको जो आंसर आएगा which will always be of the form ax plus by plus c is equal to 0, राइट? यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हमेशा रियल नंबर होंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, कोई एक जीरो हो सकता है, नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है। कोई एक जीरो कैसे हो सकता है? अभी अभी आपने देखा था, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे y वाला पार्ट जो है वो जीरो है। अगर मैं इसकी बात करूं तो x वाला कोएफिशिएंट मतलब a का जो पार्ट है वो जीरो है। So in case if a line is parallel to x-axis or y-axis, one part will may be zero, but both cannot be zero. Remember, this is very important. राइट नाउ अब जनरल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो जनरल फॉर्म से हम इसको हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, राइट? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे कोई बता रहा है देयर इज अ पॉइंट x1 y1, ओके, तो अगर if x1 y1 is any point, ये आपने एलपीपी में यूज किया है, फर्स्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, 3 केसेस पॉसिबल है, 3 केसेस पॉसिबल है। जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं ए x1 प्लस बी y1, अगर इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं और अगर मुझे वैल्यू ये 0 से ज्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, देन x1 y1, we have done this in the linear programming part, lies on non-origin side, lies on non-origin side. Second case, ax plus by1 plus c equal to 0 हो, then x1 y1 lies on the line. That means it satisfies the equation, है ना? Left hand side equal to right hand side है, lies on the line. And the third case is naturally if ax1 plus by1 plus c is less than 0, then which means, अगर अभी तो आपको समझ में आ गया रहेगा x1 y1 कहाँ पे है, lies on
the origin side of the line, right? origin side. ओके, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कि इफ दिस इज द केस, if this is the case, okay, now on the line मतलब यहाँ है, नॉन ओरिजिन साइड यहाँ है और ओरिजिन साइड यहाँ पे है, right? Now this is the first thing you need to understand. That second thing, let me explain you second thing. इसका जो जनरल फॉर्म अभी हमने सीखा है, this is the general form of the line. इसको अगर मैं चाहूँ इसका इस्तेमाल, सी बेसिकली फर्स्ट केस फर्स्ट पेज पे मैंने आपको क्या सिखाया, अगर कंडीशंस दिए हैं तो हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। मान लो अभी मैं आपको इक्वेशन ही दे देता हूं, तो आपको अलग अलग कंडीशंस कैसे फॉर्म करने हैं। तो अगर मान लो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर मुझे किसी ने बताया है कि ये इक्वेशन है, तो क्या मैं इसको बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकता हूं? और क्या मैं इसको माइनस ए अपॉन बी, मैंने बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, माइनस सी अपॉन बी लिख सकता हूं? यस, मैथमेटिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ गलत नहीं है। और अगर मैं अभी इसको देखूं तो ये कौन से फॉर्म में आ गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, विच मीन्स वी आर फॉर्मिंग अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे क्या पता चलता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा जो m है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। सो एंड y इंटरसेप्ट, c का मतलब है y इंटरसेप्ट, अगर मुझे किसी ने पूछा, देन दैट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b. So in case if ax plus by plus c equal to 0 is the equation, slope is always given by minus a upon b and y intercept is always given by minus c upon b. You have to remember this. और अगर कुछ नहीं याद रखा तो भी ठीक है, this is very important because अगर y intercept नहीं भी याद रहा तो आप x का वैल्यू 0 लेके कर सकते हैं। Let me come to the third point. ax plus by plus c is the equation given to me, right? Is equal to 0. All right. Now, in this case, if I divide, if I take first of all ax plus by is equal to minus c. If I divide throughout by minus c, so this becomes ax upon minus c plus by upon minus c, and that is equal to minus c upon minus c. If first part, that means x upon, remember this, minus c upon a plus y upon minus c upon b is equal to 1. Now what is this basically? अगर इसको ठीक से देखो, then this is x upon a plus y upon b is equal to 1. Now this is called as double intercept form. This is called as double intercept form. Now इसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे लिए, तो x इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b. नाउ अगेन इफ यू कंपेयर, जो हमने ऊपर किया था x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, अगर आप कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर, यहाँ पे देखो y इंटरसेप्ट यहाँ पे भी माइनस सी अपॉन बी, यहाँ पे भी माइनस सी अपॉन बी. सो यू कैन ब्रिंग इट इन द, कोई भी इक्वेशन दिया है उसको अगर आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ तो आपको x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मिल जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग कंटिन्यूअसली इन लीनियर प्रोग्रामिंग, आपने बार बार ये किया है. So once again, very important thing, if the equation is given to you, अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो एटलीस्ट ये याद रखना है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी. राइट, लेट्स कम टू हाउ टू यूज दिस. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए जो इक्वेशंस दिए हैं. थर्ड पॉइंट अगर हम, फोर्थ पॉइंट अगर हम देखिए, वंस अगेन ax प्लस बी वाई, ठीक है, plus c is equal to 0. All right. Now, can I write ax plus by is equal to minus c? जो ऊपर किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं. Okay. Now, if I divide
क्यों करना है हम कभी देखते हैं फुर्सत में, बट अभी याद रखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं a upon root of a square plus b square से डिवाइड करो, if I divide the whole thing by root of a square plus b square, so by upon root of a square plus b square, this will be equal to minus c upon root of a square प्लस बी स्क्वायर। इसको देख के किसकी याद आ रही है? दिस इज एज गुड एज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ विच मीन्स यहां पे कॉस अल्फा की वैल्यू जो है दैट विल बी ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा की जो वैल्यू है that is b upon root of a square plus b square, and very important thing, p, which is the distance from the origin. This is going to help you to find out the distance from the origin, that is c upon root of a square plus b square. लेकिन सर यहां तो माइनस सी दिख रहा था, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ओके नाउ दिस इज द यूज ऑफ द लाइंस, ओके, जो हमने किया है सेकेंड पार्ट। सो ऑन द फर्स्ट पेज आई शोड यू हाउ द इक्वेशन कैन बी फॉर्म। इन द सेकेंड पेज आई हैव शोड यू अगर फॉर्म अपने पास है विच इज अ जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रादर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट x1 y1 है और उसमें उस लाइन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड द आंसर इज पॉजिटिव, दैट मींस द पॉइंट लाई ऑन द नॉन ओरिजिन साइड. If the answer is 0, that means the point lie on the line. If the answer is negative, which is less than 0, that means the point lie on the origin side. These are the three important things in the first part. Second part, आपको इसमें से याद रखना है, स्लोप हमेशा माइनस ए अपॉन बी है. आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट याद नहीं रखो, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं. नाउ the third important thing you have to remember from this part or this page is distance from the origin. अगर हम पूछ रहे, देखो हम बाद में भी इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हमने इधर ही फॉर्मूला डिराइव किया, इट इज c upon root of a square plus b square. Do not worry about that minus sign because we are talking about the distance. Now थोड़ा और important shortcuts या important points हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जितना भी अभी सीखा है, right? And then I will end with the today's class. Okay, I know I'm getting into the detail, but आप CET दे रहे, आप boards की exam नहीं दे रहे, but concept has to be very clear, right? And in the next lecture, in the next class, I'm going to show you concept. एक बाजू है, concept तो होना ही चाहिए, but at the same time shortcuts को कैसे use करना है हमको. So I'll be giving you shortcuts every now and then in the next class or from the next class, right? The first part is, my first point here to remember is, if the line is equally inclined, तो slope क्या होगा? 1 और -1 होगा. Line with equal intercept, line with equal intercepts, अगर दोनों equal intercepts है, right, then the slope is again either +1 or -1, right? तो फिर से मैं बता रहा हूं, लाइन इक्वली इंक्लाइंड है या फिर लाइन विथ इक्वल इंटरसेप्ट्स है. In both the cases, remember that the slope is always equal to 1 or -1. Line parallel to each other. So let's say if ax plus by, जनरल फॉर्म मैंने ले लिया, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं यहां से, is a line, right? तो ये दो केसेस देख लो इसको. पैरेलल लाइन अगर है, इसको पैरेलल लाइन है, द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन,
Okay, and the line which is perpendicular to this line, if there is another line which is perpendicular to this line, what will happen? The equation, very interesting part, the equation, because see slope is same. slope का फॉर्मूला क्या है? slope का फॉर्मूला है m is equal to minus a upon b. तो slope कौन सा पार्ट डिसाइड कर रहा है? ये पार्ट अपना slope डिसाइड कर रहा है. so if the lines are parallel, we have already done in the last class, if the lines are parallel, slopes are equal. तो अगर slopes are equal तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, ax plus by तो सेम ही रहेगा. तो चेंज जो है वो कहां दिखेगा? द चेंज विल बी इन कांस्टेंट टर्म. सिमिलरली अगर आप देखो इसको, अगर आप मैं इसको अगर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, देखो अभी आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम में अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर, द स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल. हाउ डू दे रिप्रेजेंट इन द जनरल फॉर्म? इट इज bx plus bx minus ay plus k equal to 0. Now remember, once again I repeat, ax plus by plus c equal to 0 is the original line. उसके parallel line का equation होगा ax plus by plus k equal to 0, and ax plus by equal to plus c equal to 0. इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? bx minus ay plus k equal to 0. तो क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन के बदले लाइन में क्या करना है? a and b को इंटरचेंज करना है. वंस अगेन रिमेंबर यहां पे इंटरचेंज क्या क्या करना है? इंटरचेंज ए एंड बी, ए एंड बी. ए के बदले बी लिखो, बी के बदले ए लिखो. नंबर 1. नंबर 2, चेंज द साइन बिटवीन ए एंड बी. दोनों के बीच में जो साइन है वो चेंज होगा. तीसरा, चेंज द कांस्टेंट टर्म. 3 चीजें चेंज होगी. सी अगर पैरेलल है तो इजी है, ax प्लस by सिर्फ आपको कांस्टेंट चेंज करना था. अगर परपेंडिकुलर है तो आपको 3 चीजें करनी है, a के बदले b, b के बदले a. बीच वाला साइन जो है वो चेंज करना है और कांस्टेंट टर्म भी चेंज होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा है, ये आपने स्कूल डेज में भी पढ़ा है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी, उसमें राइट एंगल्ड, कहां पे राइट एंगल है? राइट एंगल्ड एट ए मान लो है, ए को है. तो अगर मान लो बी को है, इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, राइट. नाउ ये यहां पे याद रखना, अगर राइट एंगल एट ए है तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी करना है, राइट एंगल एट सी है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी करना है. लास्ट पॉइंट, अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा इसके पहले आई एम सो सॉरी, इसके पहले अगर हमने इसकी बात की है तो लेट मी टॉक अबाउट ऑर्थो सेंटर. सरकम सेंटर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन होते हैं. ऑलराइट. ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अल्टीट्यूड्स, मतलब सामने वाली, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें. ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, right angled at B is B. तो अगर राइट एंगल B पे है तो ऑर्थो सेंटर भी B है तेरा, और अगर राइट एंगल तेरा A पे है तो तेरा ऑर्थो सेंटर भी A है. द लास्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by coordinate axis
and the line. सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसको थोड़ा याद रखना है, सीईटी में टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा चलो मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वाई एक्सिस था, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आई ड्रॉ अ लाइन, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन जो है ना, दिस लाइन इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, लेट मी शो यू दिस प्रॉपरली। ओके, इसी के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला था, ये जो पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट है, ये होने वाला है माइनस सी अपॉन ए। याद है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था माइनस सी अपॉन ए। All right, it is minus c upon a. Can you see this? Right, and what is the y-intercept? Minus c upon b. Acha, when I say, because this is a right angle, when I say the intercept is minus c upon a, इसका मतलब ये लेंथ जो है ये माइनस c upon a है, और ये लेंथ जो है that is minus c upon b है। अब अगर तेरा इतना भी समझ में आ गया, तो बेसिक क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल is half base into height, ठीक है। तो यहां पे आएगा सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मॉड ए बी। मैं मॉड इसलिए ले रहा हूं बिकॉज एरिया मुझे पॉजिटिव करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ ये चीजें आपको, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, और मैं चाहता हूं कि आप ये क्लास को है ना थोड़ा सा सीरियसली वापस एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू मेक द नोट्स, आई वॉन्ट यू टू आस्क द डाउट इफ यू हैव। तो अगर डाउट्स है तो डेफिनेटली अगर आप ये नंबर पे अगर आप डाउट्स भेज सकते हो, राइट। आई नो आई एम टेकन 2 classes a very long time to discuss the basic concept में, और पूरे basic concept अभी हुए नहीं है। This is for the first part, that is equation of line। तो जितने भी अभी मैं जा रहा हूँ तो basic concepts, once again remember that this is not normal boards, हम लोग CET के लिए prepare कर रहे हैं। Remember CET के लिए concepts are very important। From the next class I am going to start with the questions or numericals, and I am going to show you how we can use the शॉर्टकट्स और भी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस के ऊपर बेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।